हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम कोर्सेरा के कोर्स एथिक्स टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के वीक 1 के मॉड्यूल टेस्ट के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज एलिस वर्क्स फॉर अ कंपनी दैट डिजाइन्स कमर्शियल सोलर पैनल्स. Her job is to test prototypes for defects and risk. In the company's new design SP3333, there is a defect. Short circuits and overheating of a key component are likely when the ambient air temperature rises above 50 degrees Celsius. However, despite testing SP3333, Alice never comes across any defect because none of her tests are carried out above 50 degrees. Because Alice approves SP3333, it is developed for the market. When SP3333 has been on the market for 1 year, a fire is reported due to a short circuit that happened in conditions of high ambient air temperature. Alice claims that she is not responsible for the fire. What is the best thing to conclude about this situation? इसका आंसर होगा Alice is not morally responsible for the fire because she did not know about the problem. Next पे आते हैं. Suppose that for fun, Jansin purposely hacks information from the email account of a colleague without permission. Which of the following conditions of passive responsibility is Jansin missing in such case? इसका आंसर होगा all of the conditions of passive moral responsibility are met. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है which of the following best explains the fact that it is possible for an engineer to have conflicting responsibilities as a result of being both an employee of a company and a professional engineer. इसका आंसर होगा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट पे आते हैं. इन January 1986, Space Shuttle Challenger crashed shortly after takeoff. Both NASA project team and the Morton Thiokol management made a casual contribution to the disaster because both could have averted the disaster by postponing the launch. Apart from the casual contribution, in order for someone to be blameworthy, usually the following conditions need to apply. अब ये कुछ conditions के नेम दे रखे हैं, तो इसमें हमारा आंसर होगा फ्रीडम ऑफ एक्शन, फोर्सिबिलिटी एंड रॉन्ग डूइंग. इसका मतलब फर्स्ट 3 and 5. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. Next है which of the following elements is necessary in order for a person to be morally responsible for a bad consequence for his or her action. इसका आंसर होगा the individual knew or should have known that the bad consequence was a possible outcome of his or her conduct. Next पे आते हैं. Which of the elements below is not a part of the passive responsibility of an individual in cases of a structure failures? इसका आंसर होगा the individual did not compile with the advisory code of conduct. Next पे आते हैं. What is a whistleblower? इसका आंसर होगा, हमें बताना whistleblower क्या होता है उसकी and best describes the टर्म. उसका मतलब विसल ब्लोअर की हमें मेनली डेफिनेशन बतानी है. तो इसका आंसर होगा अ विसल ब्लोअर इज अ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु गोज बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी एंड बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर to report a problem within the organization to external parties in the interest of the public good without observing normal procedures and without being loyal to his or her employer. Next पे आते हैं. Next क्या है? Ideally, a whistleblower should have evidence that would convince a reasonable impartial observer that the threat to the public is real. इसका आंसर होगा true. Next पे आते हैं. Several months after the Challenger disaster, Boys Jolly,
The engineer said the following: I must emphasize, I had my say, and I never would take away any management right to take the input of an engineer and then make a decision based upon that input. I have worked at a lot of companies, and I truly believe that there was no point in me doing anything further other than what I had already attempted to do. It is a view that fits into the model of, इसका आंसर होगा सेपरेटिज्म. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पे आते हैं. टू विच मॉडल इज पैटर्नलिज्म एंड ऑब्जेक्शन? इसका आंसर होगा टेक्नोग्राफी. अब हमारे सारे आंसर कंप्लीट हो गए हैं. इस क्विज में 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 कर लिए हैं. अब हम इसे सबमिट कर देते हैं. तो ये कंप्लीट हो गया. अब हम इसे सबमिट कर देते हैं. ये अब हमने क्विज सबमिट कर दिया. हमारे 83% मार्क्स आ गए हैं. हमने ये क्विज पास कर लिया है. इस क्विज में आप फीडबैक नहीं देख सकते हैं कि आपके क्या क्वेश्चन ठीक गए हैं, क्या गलत गए हैं. बस इसमें यही काफ़ी है कि आपकी पास हो गई है. तो ये थे कोर्सेरा के क्विज वीक 1 के आंसर मॉड्यूल टेस्ट के. इस कोर्स के और क्विज के आंसर्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर आपको किसी और कोर्स के क्विज के आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी. And thank you for watching. Please subscribe the channel.